Hello everyone and guys, welcome to the RRR series of your current affairs revision for your upcoming RBI Grade B and NABARD Grade A 2026 examination. This is day 36 of your government schemes revision and let's begin with the session here. First of all, let's look at the homework question from day 35 that I have asked you on credit guarantee scheme for microfinance institutions. And here is the question. With reference to the operational guidelines of the scheme, consider the following statement. The scheme restricts total monthly repayment obligations to 50% of the household income. The scheme focuses on providing secured loans to low income households. The scheme is aimed at improving access to credit for households with limited income. अगर आप बात करोगे दोस्तों तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं दोस्तों, और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बिकॉज यही हमने कल भी डिस्कस किया था कि रीपेमेंट जो है वो 50% तक ही जो है ऑब्लिगेशन मीट करनी पड़ेगी. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. नाउ it's a time for the question for the day and the scheme is same, credit guarantee scheme for microfinance institutions पे आज के 3 क्वेश्चंस भी हैं. पहला क्वेश्चन है जी, अंडर द credit guarantee scheme for microfinance institutions the credit guarantee coverage provided to the different categories of NBFCs microfinance institution is small NBFCs microfinance institutions will be getting 80% credit guarantee, medium 75%, large 70%. You have to let me know which of the statements given above is or are correct. तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये बिल्कुल सही है. स्मॉल को 80% मिलता है, मीडियम को 75 और लार्ज को 70%. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विद रेफरेंस टू द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. लेंडिंग बाय द बैंक्स टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज कैप्ड एट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट प्लस 2% पर एनम. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कैन चार्ज बोरोअर्स एनी इंटरेस्ट रेट विदाउट रिस्ट्रिक्शन. तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत लग रहा है बिकॉज विदाउट रिस्ट्रिक्शन तो कभी भी ऐसा कोई गवर्नमेंट चीज नहीं करेगा, तो रिस्ट्रिक्शंस तो होंगी. दूसरा लिखा है इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू द बोरोअर इज कैप्ड एट 1% below their average lending rate of the last 6 months. Is it below or is it above? You have to let me know which of the given statement is or are correct here. 1 and 3, 2 and 3, 1 only, 1, 2 and 3 or none of the above. तो यहाँ पे दोस्तों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 only is the right answer here. And now it's the time for the homework question for the day. With reference to the guarantee fee under the scheme, consider the following statements. The guarantee fee is fixed at 0.5% per annum. In the first year, the fee is charged on the sanctioned amount. After the first year, the fee is charged on the outstanding amount. Which of the following statement given above is or are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3, 1, 2 and 3 and none of the above. Do let me know the answer in the comment section and thank you for watching this video. For more such videos, please do subscribe to our YouTube channel. All the best guys.